Hello everyone, welcome to this class YouTube by SK Odia. आज हम गोटे इम्पोर्टेंट एरिया मेन्स रो रोल ऑफ सिविल सर्विस इन ए डेमोक्रेसी वेरी इम्पोर्टेंट अच्छी जो मैंने मेन्स अपियर कर बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी मेन सिलेबस रो कौन रही सिविल सर्विस रो रोल डेमोक्रेसी रे स्टेट सिविल सर्विस हो कि सेंट्रल सिविल सर्विस हो तांकर कौन गुरुत्व रही है गोटे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नवा बाकी डिटेल्स आम पेड क्लास गुराक डिटेल्स जाऊँ तो आरंभ करवा आम So before that, look at the very inspiring quote today. Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently. ठीक है, failure is simply the opportunity. Failure is not a loss, rather an opportunity. आउट के बुद्धिमतार सह आउरी अधिक बुद्धिमतार सह आरंभ करिवार सुजोग होची फेल्यूर विफलता. I appreciate this. Very inspiring. Good evening, Bonita. तो आरंभ करिया पिलाने बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छी ता पूर्व देखि दियो. There are Nigeria has recently joined as a partner country. So सेति पे BRICS गोटे intergovernmental organizations 10 countries now present as all of you know. Brazil, Russia, India, South Africa, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, and the United Arab Emirates. And there are 9 partner countries. Partner countries can participate in the meetings, ministerial meetings, but they are not members. They don't have voting rights. So there are 9 partner countries. जो partner country बोली कुहा होची and Nigeria has recently कुहा जाए जॉइन करची ब्रिक्स को. नाइजीरिया को जायंट ऑफ अफ्रीका कुहा जाए, द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अफ्रीका एंड नाइजीरिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स टुडे. देयर आर 9 पार्टनर कंट्रीज, 10 मेंबर कंट्रीज. ब्रिक्स इज ए काउंटर ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट G7 बोली कुहा जाए. वर्ल्ड इकोनॉमी रे ब्रिक्स रो इमर्जेंस टा बहुत सिग्निफिकेंट अछि नहीं कि. So आरंभ करिवा हमें आज रोल प्ले. Look at the definition by Sardar Patel in the Constituent Assembly. You will not have a united India if you have not a good all India service which has the independence of mind to speak out its mind, which has the sense of security. This constitution is meant to be worked by a ring of service which will keep the country intact. So in this statement, the Patel wanted to say the importance of all India service. Hence, is called father of all India service को जाए सरदार पटेल को. And April 21 से फर्स्ट बैच ऑफ सिविल सर्विस को एड्रेस करते से सीधा से दिवस तक 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे पालन करा जाए. एवं Ramsey Moore England रो कहिथिले while government may come and go, ministers may rise and fall, the administration of a country goes on forever. Needless to say, civil service forms the backbone of administration. Actually, in fact, civil service होची backbone administration रो, governance रो. Government आसुची जाउची, government बदलुची. So जो कंट्री रो जो गवर्नेंस होची, जो एडमिनिस्ट्रेशन होची, सेटा सिविल सर्विस उपरे डिपेंड करूची. सिविल सर्विस ही गोटे जातिर प्राण केन्द्र, गोटे देशर शासन व्यवस्थार प्राण केन्द्र कहले अत्युक्ति हेबनी. एवं सेमाने ही देशर डेवलपमेंट रो भागीदार, सेमाने ही प्रकृति रे देश को चलाउचंती बा देशर को मैनेज करचंती. गवर्नेंस रो गोटे सोल फैक्टर सी पैसिव एक्टर तांको कुहा जाए. गवर्नमेंट आसुची जाउची, पॉलिटिकल लीडर्स चेंज होउचंती, किंतु सिविल सर्विस गोटे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हिसाब रे गवर्नेंस रो चक को आगो को नउची. तो पिलाने ई जो सिविल सर्विस ता जो होची हमें जदी कहबा सिविल सर्विस आज ओरिजिनेटेड इन मौर्यन पीरियड समय सिविल सर्विस ओरिजिनेट करितला. चाणक्यकर जो अर्थशास्त्र अच्छी डील्स विथ एक्सटेंसिवली विथ द स्टेट क्राफ्ट
एवं सिविल सर्विस गोटे किंग इज रॉयल पैट्रोनेज रहिबो तेणु सिविल सर्विस ओरिजिन ऑफ सिविल सर्विस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू मौर्यन पीरियड and in Mughal period also they have a developed civil service system. And when British came, the Macaulay report 1954 was the beginning of civil service, and East India Company really functioned on the strength of civil service. And civil service has been a part of modern nation state since many ages. बहु पुरा काल सिविल सर्विस अच्छी जो दिन आधुनिक राष्ट्र गठन है बा जो राष्ट्र जो स्टेट गठन मॉडर्न स्टेट नेशन स्टेट जो दिन गठन है से दिन टू सिविल सर्विस गोटे पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नेंस सिस्टम है आसी अच्छी तेणु भारतीय संविधान रे भी सिविल सर्विस का व्यवस्था अच्छी सिविल सर्विस बा सिविल सर्वेंट्स से माने परमानेंट एग्जीक्यूटिव they are permanent executive because they choose civil service as a career. So when you join civil service it becomes a career. So जो civil service टा उटे permanent executive they are divided into two parts, central civil service, three parts you can say, the all India civil service, central civil service and state civil service. All India civil service, central civil service and state civil service को तीन भाग में विभक्त अच्छी एवं सेमानकर रोल कौन अच्छी आमर सिलेबस रो कवरेज है जे तांकर रोल कौन ता पूर्व आम नजर करवा कॉन्स्टिट्यूशन रे सिविल सर्विस में कौन पहुंच अच्छी 308 रु 300 यू कैन से आम 315 जोटा अच्छी आम 323 जाए जाइए बट जदि आम जीवा 315 रु सर्विस कमिशन आरंभ होची तेन 313 रे ए 308 रे जो डेफिनेशन टा अछि सिविल सर्विस रो डेफिनेशन एटा defines the scope and meaning of civil service in both covering central and state civil services. Interpretation बिल लिखाई छी 309 रे recruitment and condition of service of persons to the union and states. 309 अनुसार गोटे constitution empowers parliament and state legislature to create laws regulating recruitment service condition for civil servants. Parliament all India service और central service पे करिवो, state civil service उरा state legislature state civil service पे करिवो. 310 टा उची बोले पाना बहुत important doctrine of pleasure question आसे सब बोले UPSC रे provides that civil servants hold office at the pleasure of the president in case of center and governor in case of state, indicating that civil servants do not have absolute job security. That means they are under the pleasure. The government can remove them, the government can throw away them so at any time if they violate any law or if they go against the government. So 309 310 टा होची बहुत important doctrine of pleasure कहंती UPSC रो mains रे question अछि ता ऊपर. So ये जो doctrine of pleasure have been protected. बहुत सारा सिविल सर्विस लॉज रूल्स अच्छी जोटा कि सिविल सर्वेंट मान को प्रोटेक्शन दिए तेणु ये जो प्लेजर कहूँ कंप्लीट नुह बट दैट आल्सो मीन्स दैट सिविल सर्वेंट्स डू नॉट हैव कंप्लीट सिक्योरिटी दे आर अंडर द व्हिम्स एंड और द अंडर द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. 311 डिसमिसल रिमूवल रिडक्शन इन रैंक्स ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल सर्विस तामाने डिसिप्लिनरी एक्शन टा 311 अच्छी प्रोटेक्ट सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम आर्बिट्ररी डिसमिसल एंड रिडक्शन प्रोवाइडिंग ड्यू प्रोसेस थ्रू इंक्वायरी बिफोर एक्शन कैन बी टेकन. सो दैट इज देयर. एंड 312 रे ऑल इंडिया सर्विस अच्छी जोटा तुम जानथिबो अलाउज पार्लियामेंट स्पेशली राज्यसभा टू एस्टैब्लिश ऑल इंडिया सर्विसेज एंड देयर आर मेंशन जोटा हम कहूली कॉन्स्टिट्यूशन रे IAS और IPS एंड IFS जोटा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एगुरा सब अच्छी तो सेगुरा मेंशन अच्छी एवं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इंडियन फॉरेन सर्विस एपन ऐड हेनी बट सेटा गोटे ऑल इंडिया सर्विस इंडियन जुडिशियल सर्विस भी से ऐड थिला किंतु करा जाइनी तो ए दुटा आउ IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ए तीनटा होची ऑल इंडिया सर्विस दैट इज डेल्ट अंडर आर्टिकल 312. 315 पहला पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा हमर UPSC और OPSC कथा में नहीं परिबा 315 रे ताकर एस्टैब्लिशमेंट अछि ठीक अछि एवं 316 ରୁ 19 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस UPSC और OPSC रो अपॉइंटमेंट 319
आउ 320 है फंक्शंस ऑफ सिविल सर्विस and 323 है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स दे आर आल्सो मेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स कहीं ना सेटा सिविल सर्विस मानक चाकरी रे जहाँ समस्या है सेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गठन करिवो तेणु empowers parliament to establish it 330 regardless of disputes compared to recruitment and service conditions of the people तो इटा 323 अंडर रे आदमी 323 ए हबो इटा ए हबो ठीक अछि these are the articles look at the articles that are relevant to civil service तो इटा मेन ए चारटा आर्टिकल मेन अछि 308 309 310 311 312 हला ए चारटा मेन जोटा कहूछ हमें 1 2 3 4 5 ए पांचटा हला सिविल सर्विस रो मुख्य आर्टिकल जति जदि केतेबेले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कथा पचारिबो ताले चारटा आर्टिकल पांचटा आर्टिकल कथा हम नेले काफी ठीक अछि सिवा में मेन टॉपिक को पिलाने रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन ए डेमोक्रेसी द रोल एंड फंक्शंस सिविल सर्विस मु कहली बैकबोन इंट्रोडक्शन ने सबले लिखिबो कि एटा बैकबोन ऑफ गवर्नेंस सिस्टम गवर्नमेंट में go and come but civil service continues to be to manage or operate the administration जो रामसे मुईर जो कोटेशन टा बा जो डेफिनेशन टा मु देखैली सेटा बहुत इंपोर्टेंट अछि तो गवर्नमेंट में कम एंड गो but civil service continues to run the administration therefore they are called the backbone of administration without them governance is not possible तो ताले सिविल सर्विस जो कहूचे हमें तांकर डेमोक्रेसी रे कौन रोल अछि कौन टा रोल अछि से न मु शॉर्टकट कर देछि केवल पॉइंट गुरा मन रखिबो फर्स्ट हला से जो जिस्ट टा मन रखो तापर सेटा आराम से लिखि होबो गोटे दीटा पॉइंट लिखि जे परिबो किंतु तुमे ओवरऑल गोटे पिक्चर नबा दरकार कि कौन कौन सिविल सर्विस रो रोल रही प्रथम हला सिविल सर्विस रहउची बेसिस ऑफ गवर्नमेंट रो गोटे बेसिस से अर्थात गवर्नमेंट रो फाउंडेशन से कहली गवर्नमेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर परमानेंट नो दे आर टेम्पोरारी सपोज टुडे द गवर्नमेंट रिजाइन्स जदि वर्तमान गवर्नमेंट रिजाइन करिवो ताले कोन हबो ताले देश रे अचलावस्था जारी ही पारे देश रे अचलावस्था जारी ही पारे देश रे निश्चित भाव रे कोन हबो ना अचलावस्था जारी हेबो शासन व्यवस्था भुसुड़ी पड़िबो किंतु किछि असुविधा हुएनी काहे कि ना सिविल सर्विस थाए से हमर परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अछि तेनु से माने सब काम करंती तो सेति पे कोसी असुविधा हुए नाही बोली हमें देखुचे ठीक अछि तो सेटा गोटे मेजर फैक्टर कि दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट that is the most important things they are the basis they are the permanent executive एवं द गवर्नमेंट जोटा हमें कहूचे ब्यूरोक्रेटिक पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बा फंक्शनल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एटा होचली फंक्शनल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सो दे आर द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट तापरे दे आर क्रुशियल इन इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज देश रे जो लॉ तैयारी करा होची जो पॉलिसी सब सरकार करूछंती सरकार खाली पॉलिसी तैयारी करूछंती पार्लियामेंट खाली लॉ पास करूची किंतु ताकू प्रकृत रे कार्यक्रम रे परिणत के करूची कार्यकारी के करूची सिविल सर्वेंट करूछंती तेनु सिविल सर्वेंट्स प्ले ए क्रुशियल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज and different laws enacted by the legislature and they also ensure that the rules made by the government are followed in letter and spirit therefore they play a crucial part in policy point रे गोटे दीटा पॉइंट लेखा हबो बेसी लेखा हबो तो एटा को मन रखियो कि implementing law and policies next is you can say they play role in policy formulation also they not only play a crucial role in policy implementation but also play a very significant role in policy formulation how civil servant play a role in formulation because the political masters जो ministers they are laymen and women they are politicians they are laymen साधारण लोक से माने politicians but civil servants are expert administrators they have expertise so whenever a policy is made
ଯେତେବେଳେ ସରକାର କୌଣସି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ସେତେବେଳେ it depends upon the civil servants. ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆଜି ବଜେଟ୍ ବନୁଛି କି ଆଜି ଦେଶର କୌଣସି ନୀତି ବନୁଛି କି କୌଣସି ଧର ଯେଉଁ ଆମର ଲ ତିଆରି ହେଉଛି ବା ଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କରୁଛି? ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି. ସୋ as the political masters or the ministers are lay men and women and lack sufficient expertise in different areas, it is the civil servant who really formulate the policies. ଏତିକି ଲେଖା ହବ. ଠିକ ଅଛି. So they play a critical role in not only in policy implementation but also in policy formulation. ଠିକ ଅଛି. Next is stabilizing force. जोटा ମୁଁ କହୁଥିଲି ପିଲାମାନେ ଧର ଯେଉଁ ଆଜି ସରକାର ଏବେ ସରକାର ରିଜାଇନ୍ କରିଦେବ କି ଧର ସରକାର ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ସରକାର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଚାଲିପାରେ ଯାଇପାରେ. मुख्यमंत्री किए हम प्रधानमंत्री किए हम मंत्री किए हेबे आकर भाबू भाबू दिमास पड़े जाई पारे. बट से समय देश केमती चले. सो दे आर द स्टेबलाइजिंग फोर्स ड्यूरिंग द टाइम व्हेन गवर्नमेंट dissolves, during the time when there is no government. It is the civil servants, it is the large pool of civil servants who run the administrations. So therefore they are stabilizing force. They bring stability. Suppose today the chief minister dies in the state and further appointment of chief minister takes 2 months time. वर्तमान मुख्यमंत्री मृत्यु हम आउ 2 मास लगी जीव राज्य रे मुख्यमंत्री किए हम बोली भितर पॉलिटिकल डिसीजन नवा डेरी हो पारे. किंतु से 2 मास देश को चलैब किए राज्य को चलैब किए? सिविल सर्वेंट्स. से गोटे क्रिटिकल जिनसटा. गोटे दिन भी जदि राज्य रे के न रहिबो निश्चित भाव में अव्यवस्थित हो जिवो, अनार्की पळे आसीबो, अराजकता पळे आसीबो. सो सिविल सर्वेंट प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम बीइंग फॉलन इनटू अनार्की. गवर्नमेंट में कम एंड गो सेटा रामसे मुइर एटी लेखा हबो. दे एक्ट एज ए स्टेबलाइजिंग फोर्स बिकॉज व्हेन देयर इज नो political executive, when there is no government, when government dissolves or government resigns, it is the civil servants who run the administration, who implement the policy. So policy continues, implementation continues, governmental functions continues despite there is no government. It is because there is a strong force called bureaucracy or civil service. So they act as a stabilizing force. They act as a stabilizing force in the country. Major thing is the instrument of socio-economic change. Plan India bhali gote developing country re. India bhali gote developing country re where there is a need for socio-economic changes. There is a large section of good evening Nilima. ठीक है, good evening all of you. So there is a large section of people who have been poor, illiterate. देश रे दरिद्रता अच्छी, गरीबी अच्छी और निरक्षरता अच्छी. देयर इज इलिटरेसी, देयर इज पॉवर्टी, देयर इज बैकवर्डनेस. सब प्रकार समस्यार परिवर्तन दरकार हुए. तेणु सिविल सर्वेंट्स प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया. इट इज दे हु हैव been responsible for implementation of various socio-economic programs initiated by government in a successful manner. सरकार आज धरा जो सुभद्रा योजना सरकार कहले करा जिवो किंतु ताको सुचारू रूप से समाधान करा होउची. सुचारू रूप से केमती लोक मान को दिया जिवो, को लोक प्रकृत पाइबो, को लोक पाइबनी, सेटा किए करूची? सिविल सर्वेंट्स करूची. तेणु सिविल सर्वेंट्स आर in fact the instrument of socio-economic change in a developing country like India. एतिकी लेखा हो. गोटे पॉइंट गोटे दीटा पॉइंट लिखिले भी काफी, कारण एटा 12 मार्क की 15 मार्क की कोई क्वेश्चन पड़थियो, 12 मार्क 12.5 मार्क पड़थियो कि 10 मार्क के पड़थियो. तेणु एते पॉइंट हम लिखियो माने सेति पई हम पाखरे पॉइंट्स उरा थिबा दरकार कि प्रकृति रे सिविल सर्वेंट्स कोन ना. सिविल सर्वेंट्स ए उरा सब इंस्ट्रूमेंट. देन रोल इन एस्टैब्लिशिंग ए वेलफेयर स्टेट. Very important point. Very important point when you consider the role of civil service in a democratic country like India, in a developing country of India's size and dimension. We are a welfare state. Here the government is not merely a facilitator,
or not merely a keeper of law and order. Rather, government is involved in the lives of people from birth to death or from womb to tomb. सरकार एटी कौन करुच्ची ना पिलाटा गर्भरू थिला बेले भी सरकार इन्वॉल्व रहउची बिजु कन्या रत्न योजना मातृत्व बंधन जो अभियान एगुरा सब कौन होउची एगुरा त माने फ्रॉम womb to tomb from womb to tomb माने कौन from birth to death the government is there, government is involved, government is there. Government is not merely a facilitator. एटी खाली पुलिस स्टेट नुह पुलिस स्टेट माने कौन जो स्टेट जो सरकार केवल लोक मानकर खाली समाज आईन श्रृंखला परिस्थिति देखिबो सरकार चलेबो किंतु भारत रे जे सरकार होउची भारत रे जो सरकार आसी राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो खाली तांको दायित्व नुह कि खाली आईन श्रृंखला परिस्थिति को बजाय रखिए बा देश रे शासन व्यवस्था को चलेबे तांकर दायित्व होउची देशर अगणित जनता को सुविधा रे रखिबा आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करिबा एवं देशर जो माने गरीब अछंती जो माने निरक्षर अछंती जो माने डिसएडवांटेजेस सेक्शन जो माने बैकवर्ड क्लास तांकर अपलिफ्टमेंट भी सरकार रो गोटे बड़ गुरु दायित्व तेनु इंडिया बीइंग ए वेलफेयर स्टेट the state has more responsibilities and such responsibilities are undertaken or shouldered by the civil servants in practice से माने ही वेलफेयर स्टेट को रियलाइज करती आज जदि भारत अर्थनीति भारत जो जनमंगलकारी राष्ट्र व्यवस्था जहाँ संविधान रे एनविजन कराइतला सेटा आज जदि सतरे रूपायन होउची सतरे सेटा इम्प्लीमेंट होउची ताले इट इज द सिविल सर्वेंट हु हैव been instrumental, who have played a very pivotal role in establishing a welfare state or in launching welfare programs. In केमती establishment करछन्ती civil servants. Now they have been instrumental in implementing welfare programs. They are also playing a crucial role in designing welfare programs. आज जो योजना मान सब देश रे होउची सेगुरा सब कहार ब्रेन चाइल्ड कहार सब सूत्रपात हो सिविल सर्वेंट माने तैयारी करछन सेडा सेमानकर आउटलुक सेमानकर फारसाइटेडनेस सेमानकर दूरदृष्टि रु सब जिंस तैयारी होउची एवं केमती लोक मानको डिफरेंट सेक्शन लोक मानको प्रति जो इकोनॉमिक ग्रोथ पहुंचबो केमती समस्त इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हेबे सोशली एम्पावर्ड हेबे सेटार जो विजन टा सेटा जने सिविल सर्वेंट सरकार को दउची तेनु दे प्ले ए वेरी क्रिटिकल रोल ए पाइवोटल रोल इन नॉट ओनली in implementing welfare programs but also in establishing a welfare state that is envisioned in our constitution. So that is a very great role to be played. You can add this. So जो पॉइंट उरा टिके अधिका दरकार ताको टिके अधिका हाइलाइट करिवो कारण मने रखो भारत गोटे वेलफेयर स्टेट भारतर संविधान रे डीपीएसपी रे हो किबा प्रिएम्बुल रे हो वेलफेयर स्टेट रो उल्लेख करा हिची सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस सामाजिक आर्थिक न्याय रो व्यवस्था करा हिची त माने भारत एक जनमंगलकारी जनहितकारी राष्ट्र तेणु से राष्ट्र को सफल रूपायन करिबा बट टू रियलाइज द वेलफेयर स्टेट द सिविल सर्वेंट्स प्ले ए वेरी पाइवोटल रोल ठीक अछि सॉरी ठीक अछि बोलाने तो दैट इज देयर नेक्स्ट play developmental functions the infrastructural development हो industrial development हो कि जे कोनोसी देश रे जहाँ जे सब development होउची से development रो role play करची कि civil servants so civil servants are also crucial play crucial role in bringing out developmental functions envisioned by the government so that is infrastructural then adjudication roles in case of administrative adjudication it a co-adjudication administrative adjudication so civil servants play a very important role in administrative adjudication through tribunals administrative adjudication through tribunals माध्यम रे जो हमर सैट अछि कैट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो कि हमर सैट हो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो ता माध्यम रे सरकार सिविल सर्वेंट का जो दर सैट है कि कैट है से आईएएस ऑफिसर माने जज रहंती
एवं एटी सैट जो आम कहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ओडिशा रे थिला एबे इनऑपरेटिव अच्छी तो से केवल कौन ट्रिब्यूनल रे एडमिनिस्ट्रेटर माने भी जज रहंती कारण ट्रिब्यूनल टा खाली जुडिशियल लोक जज हेबेनी नॉन जुडिशियल लोक भी जज हो पारे से रेस्पेक्टिव एरिया लोक तेणु ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गुड़ा कहीं तैयारी हुए ना एगुड़ा सब गवर्नमेंट सर्वेंट मानकर सिविल सर्वेंट मानकर सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट गुड़ा से माने रिजॉल्व करती तेणु एथिरे हेड जज हुंतनी जुडिशियल लोक बेसी हुंतनी बेसी एथिरे प्रशासक माने एथिरे कोन विचारक हंती तेणु थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द सिविल सर्वेंट्स आल्सो प्ले a pivotal role in administrative adjudication and they play a critical role in resolving disputes relating to civil service in India. So these are the roles of civil servants that you can better organize. So there are how many points? There are 8 points that we have developed and another is interface between government and people. The last one. Getting the point or not? All of you are getting the point. The civil servants are a bridge between people and government. लोक केतेबेले कहबे सरकार भल बोली जेतेबेले लोकंक पाखरे सरकारी सेवा गुडिक ठीक समय रे पहुंचबो जेतेबेले लोकंक पाखरे सरकारी सेवा बा सरकारी योजना गुडिक सठिक भाव रे पहुंचबो एवं सठिक लोक को दिया जिवो जेंति धरा जो आमे कहूचे पीएम आवास योजना कि बिजु पक्का घर योजना जहाँ भी ना तार कि आमर गोपबंधु आरोग्य योजना जो हेल्थ स्कीम टा अच्छी जदि गोटे प्रकृत लोकटा पाइबनी गोटे गरीब लोकटा जदि न पाइब जदि प्रकृत बेनिफिशियरी न पाइब ताले से सरकार को बदनाम करिवो एवं से प्रकृत लोकों को न दबार कारण किए सिविल सर्वेंट्स हेबे तेणु सिविल सर्वेंट्स जेहेतु मंग धरती दे आर द स्टीयर्स मैन they are the steering persons of administrations से माने जहाँ करिवे से अनुसार सरकार बदनाम होबो न सरकार सुविधा पके जदियो दे आर अंडर पॉलिटिकल प्रेशर रे भी किछि काम करा जाए बट फिर भी सिविल सर्वेंट्स रो भी रोल रहउची सो दे आर द इंटरफेस between the people and the government they are the bridge between the people and the government the popularity or the success of governance squarely depends on a strong and robust and efficient civil service system. That is the main thing. Interface between government and people. ठीक है बुलाने. So that is there. So हमें देखिले जे कौन रोल रहिला हमें देखिले पिलाने इटा 9टा रोल रहिला तो ये जो 9 पॉइंट्स को भलो भाବରେ घोषिबो 9 पॉइंट्स रोल 9 पॉइंट्स रोल टाको भलो भाବରେ प्रैक्टिस करिवो एटा रोल तार रोल ऑफ सिविल सर्विस इन ए डेमोक्रेसी से स्टेट सिविल सर्वेंट हो कि सेंट्रल सिविल सर्वेंट हो तांकर रोल टा कौन रहे आम देखिले 9टा पॉइंट से 9टा पॉइंट को आगे प्रैक्टिस करिवो 9टा पॉइंट मु देखै दिस तुमको 9टा पॉइंट को प्रैक्टिस करिवो एवं सेटा को टी भल से देखिबा उथरे सेही पॉइंट गुरा को टी चेक करे सबआडे समान रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन हला कि रोल इन बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इटा मेन जिंस रहउची तापरे implementing law and policies and role in policy formulation and stabilizing force they are a completely stabilizing force permanent force they are instrument of social change they are instrumental in implementing welfare scheme and establishing welfare state they also play very pivotal role in developmental functions of the country and they are interface between the government and people then what are the factors that are responsible for rising वर्तमान जब देखिबा वर्तमान तो ओएस अफसर माने तो काम अधिका वर्तमान तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अधिका काहे कि ना मॉडर्न स्टेट बा टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एडवांसमेंट हला परे बहुत सारा जिंस सरकार करूची बहुत सारा जिनस सरकार द्वारा जो आमर कहूचे आमे भूलेख जो अच्छी से तू कौन से तू पटा गोटे लोक जो जमी किणुची तार पटाटा सी ऑनलाइन रे देखि परछि बा डाउनलोड करि परिबो तेणु से जो ऑनलाइन रे अपलोड करिबा पटाटा को ठीक रे ये करिबा एटा कहार दायित्व तहसीलदार रो दायित्व होइतिबो तहसीलदार रो कर्तव्य तेणु सिविल सर्वेंट मानकर रोल टा जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस रे
परिवर्तित समाज रे बा जो टेक्नोलॉजी और साइंस आसला पर जो समाज रे परिवर्तन होईछि ता पर एटा बढ़ी तेणु देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिवेटिंग द रोल of civil service or the importance of civil service. There are several factors. Elevating माने कौन उठेबा बा राइज करिबा तेणु किछिटा फैक्टर अछि जोटा एबेकार सिविल सर्वेंट्स मानकर जो माने एबे मॉडर्न टाइम रे बा एबेका समय जो माने जॉइन करूछंती बा जॉइन करिसंती सेमानकर रोल टा अधिक कोन होउची अधिक बढ़ी जाउची गुरुत्व भी अधिक बढ़ी जाउची कौन से फैक्टर रही सेटा देखिबा तो खाली फैक्टर लिखी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मु कहली जमती ई गवर्नेंस सिस्टम आसी सब जिनस इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम इलेक्ट्रोनिकली कम्युनिकेट कराऊची जमती है मु कहली कि जने लोक जमी किनिला तार पट्टाटा सी आगुरु जाई कि तहसील रु आणुथिला किंतु एबे कोन से पट्टाटा चाहिबो निजर देखि परिबो भूलेख साइट रे भूलेख जो ये रे देखि परिबो तेनु सेटा को अपलोड किए करिवो एडमिनिस्ट्रेटर करिवो अपलोड नले से केमि देखिवो तेणु से जो प्रॉम्प्टनेस टा से जो इंपोर्टेंस टा बा जो रोल टा सेटा केवल कौन पे ही साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे सिविल सर्वेंट मानकर रोल टा आउरी बढ़ी जाइछि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो होची सर्विस इंडस्ट्री जो आसुची एटी मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कथा कहूची तेणु इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बा डेवलपमेंट है सर्विस रिलेटेड जिनस गुरा सर्विस इंडस्ट्री गुरा बढ़िला तेणु से भी सिविल सर्वेंट कंट्रोल करवा ये करवा देशर जो चेंज होची आर्थिक परिवर्तन होची से सिविल सर्वेंट मानकर रोल होची तेणु इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन बढ़ुची विभिन्न बड़ बड़ नुआ नुआ सहर तैयारी होची जेन धर जो कटक भुवनेश्वर आम देखुचे तो 20 वर्ष पूर्व एटी एते रिस्क नथिला किंतु एबे जे धर एडमिनिस्ट्रेटर हबो कि बीएमसी रो जे ऑफिसर होची कि जे माने कमिशनर होची कि जे दायित्व रे रहउछंती बीएमसी कमिशनर दायित्व रे रहउछंती तांको पई जेंतेले समस्या आउरी बढ़ुची काहे कि ना रैपिड एक्सपेंशन होची अर्बनाइजेशन होची रूरल एरिया को पेरिफेरी को बढ़ुची अर्बनाइजेशन एरिया टा धीरे धीरे एक्सपांड होची तेनु जत्ते अर्बनाइजेशन एक्सपांड होची सेते सिविल सर्वेंट रो रिस्पांसिबिलिटी भी एक्सपांड होची कैटरिंग और ऑफरिंग विभिन्न प्रकार नुआ नुआ सर्विस दिया जाउची विभिन्न प्रकार वेस्ट मैनेजमेंट पई सैनिटेशन पई हेल्थ पई बा विभिन्न प्रकार पार्किंग फील्ड पई केते जिंस रिस्क बढ़ुची तेनु रैपिड urbanization and population growth also giving or adding role to the civil service or also they are becoming important growing importance use तेणु आज धर तुम सहरांचल वेस्ट मैनेजमेंट होची घर अलिया नहीं कि कुआड़े कुआड़े नहीं पकाउछंती कोठी वेस्ट मैनेजमेंट कराउची एगुरा सब आम जानुचे कि सेटा सिविल सर्वेंट करूची गोटे दिन कि धरी जदि किछि दिन जदि सहरांचल अलिया निष्कासन न हुए जो सब घर अलिया कलेक्शन न हुए ताले निश्चित भाव में द अर्बन एरिया विल बिकम ए हेल नरकरे परिणत हो तेणु दिस क्रिटिकल रोल जो रैपिड अर्बनाइजेशन होची पॉपुलेशन ग्रोथ होची सेतिरे भी साइमल्टेनियसली बा कॉन्सिक्वेंशियली द रोल ऑफ सिविल सर्विस इज आल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे सो रैपिड ऑर्गेनाइजेशंस देन इमर्जेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट से आम कथा हेले कि इमर्जेंस वेलफेयर स्टेट आउरी बढ़ुची आउरी डिफरेंट स्कीम जंती मु सुभद्रा स्कीम रो एग्जांपल देली सुभद्रा स्कीम इज एनविजन बाय द गवर्नमेंट नो डाउट बट दैट is proper implementation of this welfare scheme for women empowerment, financial inclusion of women is basically depends upon a pool of civil servants. से माने ही दौरान जो माने जो ऑफिसर माने काम करछंती केमती प्रति लोक को दिया जीवो केमती प्रति लोक तार हिताधिकारी पाइबे केमती लोक माने अशांति न होबे केमती पब्लिक रिएक्शन भलो रहिबो तो से विषय रे जो तत्पर होउची कि सिविल सर्वेंट तेणु एक्सपांडिंग रोल रे इटा भी गोटे पॉइंट पड़ी पारे तापर कैलामिटीज एंड क्राइसिस मैनेजमेंट सेटा गोटे देयर आर डिफरेंट क्राइसिस इमर्जिंग इन इंडिया डिफरेंट कैलामिटीज होउची डिफरेंट तो कोई सर आगे कौन कैलामिटी नथिला कि थिला कैलामिटीज किंतु आगे कैलामिटी कैजुअलिटी एते नथिला तेणु आज धर जो गोटे बन्या होउची अर्थक्वेक होउची बात्या होउची बड़ बड़ सहर विभिन्न स्ट्रक्चर नष्ट हो जाउची तेणु आगे सेटा नथिला
तामाने सेठी रैपिड रिनोवेशन काम दरकार होची पुनी रिस्ट्रक्चरिंग दरकार होची पुनी सेडु नूतन भाव में निर्माण दरकार होची तेनु क्राइसिस आ विभिन्न प्रकार क्राइम बढ़ुची क्रिमिनोलॉजी भी गोटे टाइप रो रिस्क हेगरानी सिविल सर्वेंट्स पई गोटे एरिया रे तेनु सेठी पई calamities au crisis management also increases the importance of civil servants to a great extent. So that is there calamities and crisis management रो point अच्छी ठीक अच्छे पिलाने ता पूर्व जीवा पे देखी थी OPSC मेंस रो आंसर राइटिंग बैच ऑलरेडी सक्सेसफुली इज बीइंग रन successfully is being run in the country. So therefore that is essential कि to join this batch एटा हमें आरंभ कर दी ऑलरेडी तार पीडीएफ भी दिया जाउची आ पॉसिबल क्वेश्चन आंसर लिखा होची जो मन जॉइन करिया कथा वर्ष मेंस पई यू कैन जॉइन दैट प्रॉब्लम्स कोन अछि सिविल सर्विस रा में रोल देखिले ग्रोइंग इंपोर्टेंस देखिले कोन प्रॉब्लम्स रहउची तांकर कोनटा एक्चुअली कोन प्रॉब्लम्स रहउची सिविल सर्विस गोटे हला लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड पुअर मैन कैपेसिटी बिल्डिंग सिविल सर्वेंट्स मेंटेनिंग स्टेटस को they are not getting refreshed they are not getting updated and there is lack of refresher trainings government training व्यवस्था भी बहुत poor and professionalism grow करुनी तो lack of professionalism they are not able to cope with the changing technological society जो technology but technology such a best society रे से माने cope करि पारनांती तो प्रोफेशनलिज्म लैक होची कैपेसिटी बिल्डिंग लैक होची जोटा कि कोट ना कोट सिविल सर्विस रा सिस्टम को क्रिटिसाइज करा होची इनइफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम हियर द रियल परफॉर्मर जो माने प्रकृत जो सिविल सर्वेंट माने भलो काम करछंती जो ऑफिसर माने भलो काम करछन तांको रिवार्ड मिलुनी एटी पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिवार्ड दिया जाउची तेणु सेति पई जो प्रॉपर इनइफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम जो होची द रियल परफॉर्मेंस और द गुड सिविल सर्वेंट्स और एबल सिविल सर्वेंट्स और दोज हु आर परफॉर्मिंग वेल they are not getting rewarded by the government and the incentive system is not applicable by is not giving them any benefit therefore they are disheartened समान को निरुत्साहित लागुची they are not interested तेणु गोटे प्रॉपर इफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम इंसेंटिवाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस सर्वेंट्स वर्क शुड बी देयर प्रॉपर गोटे इंसेंटिव सिस्टम रहिबो कि गोटे वीडियो एक भलो कामटा करिछि तेणु तांको टिके रिवार्ड दिया जाऊ किंतु सेटा होउनी बेसिकली जो माने मेरिटोरियस बा जो पॉपुलर and effective civil servants are not getting rewarded by the government and therefore they lose interest in working well for the system. The rigid and outmoded rules and procedures. The rigid and outmoded rules and procedures that are existing since British times does not give the civil servants an free hand to apply their own knowledge and own experience in implementing these things. अर्थ से माने तांगा निजर ज्ञान बा गोटे फ्री नॉलेज पाउनांती फ्री स्कोप पाउनांती समान सब जिनसटा रूल्स रेगुलेशन जो रेट टैपिज्म रहिछि तेनु सेटा कोड ना कोड सिविल सर्वेंट्स को हापर करछि सो वी हैव टू अवॉइड द रेट टैपिज्म एंड गिव सिविल सर्वेंट्स ए फ्री हैंड to apply their own knowledge and experience in running the administration. So rigid rules and procedure hampers efficiency of a civil servant. So rigid rule ta kon kurchi civil servant manakar efficiency को kon kurchi na hamper करुछि तेणु लू तांको टिके फ्री हैंड दबा कथा फ्री नॉलेज रे तांको निज इच्छा रे निज बुद्धि रे समान जेमति काम करि परिबे सेटा दबा कथा किंतु हमर से ब्रिटिश हैंगओवर रहिछि एंड द ब्रिटिश हैंगओवर causes a lot of trouble for the civil servants and they are unable to act efficiently and effectively. Therefore, that is a point also, that is a problem कि rigid rules and जो British hangover रही मु कहूची the British hangover को उठेबा दरकार एवं सेटा ही मेजर जिंस कि जोटा कि सिविल सर्वेंट मान को एक्टिव करि परनी स्मार्ट करि परनी आउ समाने निजर एप्लीकेशन नॉलेज और एक्सपीरियंस को अप्लाई करि परनांती एंड रेट टैपिज्म इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कम्स अंडर दिस रिजिड एंड आउटमोडेड प्रोसीजर्स तापरे
lack of accountability and transparency procedure with no adequate protection for whistleblowers, lack of adequate accountability and transparency in corruption has affected the civil service system to a great extent. And जो whistle blower जो act है हमारा whistle blower act 2011 रही जोटा जोटा कि करप्शन एक्सपोज करिया पे गोटे नॉर्मल लोक जदि कंप्लेन करूची तापे प्रोटेक्शन नहीं whistle blowers protection act जदि तैयारी कराई बट इन प्रैक्टिस इट हैज बिकम इनइफेक्टिव तो सेमती किसी दिया जाए एंड सीटा बहुत सारा जिनस जगह इम्प्लीमेंट होनी तेणु व्हिसिल ब्लोअर्स एक्ट आउ जो इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म टू चेक करप्शन मस्ट बी स्ट्रेंथेन्ड जो इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म रही करप्शन चेक करने लोकपाल है सेंट्रल विजिलेंस कमिशन है एगुरा को सब आउरी स्ट्रेंथेन करिवार दरकार अच्छी व्हिसिल ब्लोअर मान को आउरी प्रोटेक्शन दबार अच्छी व्हिसिल ब्लोअर इज ए पर्सन हु एक्सपोजेस करप्शन who communicates to the authority for that some corruption is being taken place. So it out a political interference causing arbitrary transfer and insecurity in tenures. Political politicization of civil service is also a problem. जोटा कि civil servant मानों को बहुत हैरान रे पकाउछ. तेणु यहाँ गोटे प्रोब्लेम तार यहाँ गोटे प्रोब्लेम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आर्बिट्रेरी मन इच्छा ट्रांसफर करवा मन इच्छा टेन्योर को ये करवा सेटा गोटे प्रोब्लेम होछि. An erosion in ethics and values which has caused rampant corruption and inequity. Yes, it is a major factor. It is personal जिनस इटा सिविल सर्वेंट्स मानकर जो इरोजन इन एथिक्स वैल्यू जो मोराल वैल्यू जो नैतिकतार इरोजन घटुची एवं से माने सबु जिन पैसा पाई से माने सबु एक्सटेंट को जाई परछंती तो सेटा कोट ना कोट सिविल सर्विस को प्रभावित करूची. तो एथिकल वैल्यू धीरे धीरे नष्ट हो जाउची सिविल सर्वेंट्स को मध्य एवं करप्शन रैम्पार्ट हो जाउची सेति पई सेटा गोटे बड़ इश्यू रहउची सिविल सर्वेंट्स रो सेटा गोटे मेजर जिंस तुमे देखिबो. पैट्रिमोनियलिज्म जोटा होची फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन व्हिच ऑल पावर्स फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द लीडर जो पैट्रिमोनियलिज्म रहउची जे टिके बॉस रहिला जेंति हमर पांडियन केस देखिबा से जे पांडियन जेतबे थिले से कोन सब सिविल सर्वेंट्स माने तांकरी कथा ही मानुतिले बा सी जहा कहउतिले से हाउतला सो गोटे डोमिनेंट ऑफिसर रहिले गवर्नमेंट रे जे क्लोज रहिला से सब डोमिनेट करी रखिबा एटा गोटे कोट ना कोट सिविल सर्विस रो एफिशिएंसी बा इफेक्टिवनेस ऊपर गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होउची. तेणु पैट्रिमोनियलिज्म जो कथा कहूचे से जो लीडर रोचंदी बा पॉलिटिकल लीडर हला कि जनक कथारे सब एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन परिचालित हवा ये जो पैट्रिमोनियल सिस्टम टाको एटा को अबोलिश एटा को कोन अवॉइड करिया कथा. तेणु पैट्रिमोनियल्स इन व्हिच ऑल पावर्स वेस्टेड दैट इज आल्सो एंड अनदर एंड मोस्ट ग्लेयरिंग थिंग इज दैट सिविल सर्वेंट्स मेंटेन स्टेटस को दे आर रेजिस्टेंस टू चेंज मेंटेन स्टेटस को से माने अपडेटेड होबा को चाहती नहीं एवं से माने निज को सिक्योर माने करंती एवं किछि रिस्क नबा को चाहती नहीं. तेणु से जो इनोवेशन लैक ऑफ बीइंग अपडेटेड इट आल्सो कॉजेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम लॉट ऑफ इट आल्सो हैम्पर्स द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सिविल सर्विस सिस्टम टू ए लार्ज एक्सटेंट. सो रेजिस्टेंस टू चेंज माने कोन से माने स्टेटस को मेंटेन करंती अर्थात चेंज होंतनी परिवर्तित टू कोप विथ द चेंजिंग टाइम cope with the changing mindset. The civil servants also have to remain updated. टेक्नोलोजी बढ़ुची बर्तमान ई गवर्नेंस आसुची बा विभिन्न प्रकार लोक टेक्नोलोजी यूज करछंती तेनु सिविल सर्वेंट भी सेतिर अभ्यस्त बा दरकार. बट बहुत लोक अछंती जो माने चेंज होनांती अपडेटेड होनांती बिकॉज दे फील दैट दे आर सिक्योर. तो सेटा गोटे कोट ना कोटी सिविल सर्विस रो गोटे प्रॉब्लम हे कि रहिछि. दे हैव टू वेलकम द चेंजेस एंड दे हैव टू बी अपडेटेड and they have to be updated so as to cope with the changing time. सेमान को निज को परिवर्तन करिया पड़िबो परिवर्तित समाज रो आह्वान सहित मिसे दो को पड़िबो कारण सेमान होचंती प्राण आधार बा सेमान होचंती कर्णधार गवर्नेंस रो शासन व्यवस्था रो सेमान होचंती कर्णधार बा स्टीयर्स पर्सन्स. तेणु दे हैव टू बी अपडेटेड दे हैव टू बी चेंज्ड. So that is therefore is very critical role that their resistance to change. So these are the factors which causes lot of things for the civil servant. बुझले पिलाने तो हमें देखले आज कि रोल कौन सिविल सर्विस रो एवं प्रॉब्लम माने कौन एनहांसमेंट एची सिविल सर्वेंट्स रोल रे
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बा एगुरा जो आ सब हेची तार सब कौन एनहांसमेंट हेची एवं कौन तार समस्या रही सेटा गोटे मेजर फैक्टर एवं आज वे फॉरवर्ड ऊपर भी देखि देबा ता पूर्व देखि दियो यूनिकॉर्न बैच जोटा हमर काल टू लॉन्च होची फाउंडेशन बैच जो थरे प्रीलिम मेंस इंटरव्यू पे कंप्लीट गाइडेंस रहउची पिलाने तो यू कैन जॉइन द बैच to ensure your success in the upcoming civil service examination. We are giving education complete package for prelims, mains and compulsory जो papers रही Odia English and also guidance for interview. We accept optional. So kindly join the batch Unicorn to ensure success in upcoming civil service examination. Then institutions for federalism जोटा हमें इटा तो पढ़ी दीचे इटा किसी दरकार नहीं इटा तो किसी दरकार नहीं ओके so way forward जोटा हमें देखो चे पिलाने way forward रे हमें आसुचे अच्छा इटा way forward टा इटा तार अच्छी ओके ठीक अच्छी so हमें solution टा तार जो problems जोटा लिखिले सेटा ही solution रे हमें लिखी परिबा तो सिविल सर्वेंट्स मान को निज को चेंज करवा दरकार दे हैव टू बी रिमेन अपडेटेड एंड देयर मस्ट बी पीरियडिकल रिफ्रेशर ट्रेनिंग टू इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म एंड टू इन्फ्यूज responsibility, sense of accountability, and the whistleblower system should be strengthened, and there must be certain anti-corruption measures and ethical values for my civil servants निज को personally groomed करवा दरकार. So से जो problem गुरा में देखले सेटा को change कर देले उल्टे देले सेटा ही जीवो way forward. So overall हमरो पाठ ही एतिकी जदियो हमें पूरा लिखिलेनी किंतु गोटे विस्तृत आलोचना कले एवं मु आशा करछि कि ए जो आलोचनाटा ए जो मेंस रो जो सिलेबस ऊपर तुमरो कांसेप्ट क्लियरेंस पे हेल्प करिवो आउ टिके पढी देले निश्चित भाबरे तुमे टॉपिक ऊपर किछि ना किछि लिखि परिवो. इज दैट क्लियर? So I think it is clear for all of you. So it is a vital thing that remember that you have to be fast acquainted with the syllabus. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ମୁଁ ଆଣୁଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କି ଟପିକ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଏବଂ ଟପିକ୍ର କ'ଣ ଜରୁରତ ଅଛି କ'ଣ ସେଥିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ इन ए डेमोक्रेसी कौन रोल रहा कौन एनहांसमेंट होती रोल रे एवं कौन प्रोब्लेम रही सिविल सर्वेंट्स रो एवं तार सॉल्यूशन है से जो प्रोब्लेम गुरा को समाधान कले निश्चित भाव में सिविल सर्वेंट 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम रहा दरकार एंटी करप्शन मेजर रहा दरकार रिफ्रेशर ट्रेनिंग सब सिविल सर्वेंट्स मान को दरकार एवं प्रोफेशनलिज्म इनफ्यूज पीरियडिकल ट्रेनिंग दरकार अकाउंटेबिलिटी एनश्योर करने जो इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म को स्ट्रेंथन करिवार अछि व्हिसिल ब्लोअर सिस्टम को स्ट्रेंथन करिवार अछि एवं एथिकल वैल्यूज पई किछिटा पीरियडिकल कोन ट्रेनिंग सेशन बा जो हमर पीरियडिकल एथिकल सेशन करिवार दरकार अछि एवं पर्सनली सिविल सर्वेंट्स मन को निज को सचेतन करिवार अछि कि सेमाने देशर गोटे गुरुत्वपूर्ण व्यवस्था रे अछंती तेनु तांकर कोनोसी कार्य संपूर्ण प्रशासन को विषाक्त कर दे पारे. So they have to be cautious. Okay. So thank you very much for watching me on this video and give your valuable comments whether it is a good one or not and suggest anything that can be brought on YouTube. Okay. Thank you very much to all of you, especially those who are joining daily for my YouTube sessions. Thank you very much to all of you.